हम जानते हैं कि हमारे पास जो चीज है, वह कितनी कीमती होगी, उसे खोने का भी भय उतना ही तीव्र होगा। हमारे पास जो सबसे कीमती चीज है वह है हमारा जीवन, क्योंकि जब हम इसे गंवाते हैं तो हम सारी चीजें खो देते हैं। इसलिए मौत का भय सबसे बड़ा भय है। कोरोना वायरस घातक है, इसलिए हम नहीं जान सकते हैं कि यह कैसा है। हम यह भी नहीं जान सकते हैं कि क्या हम इससे ग्रस्त हैं, और इससे भी बड़ी बात यह है कि इसके इलाज की अब तक कोई दवा नहीं है। वायरस के अपने भय से के साथ जुड़ी बहुत सारी चिंताएं हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था में गिरावट आ सकती है। लोग स्वतंत्र रूप से कहीं यात्रा, खरीदारी, यहाँ तक लोग स्वतंत्र रूप से कहीं यात्रा या खरीदारी या कहीं काम तक नहीं कर सकते हैं। लोग 1913 के दशक की महामंदी से भी बदतर स्थिति की आशंका जता रहे हैं। भविष्य को लोग लेकर अनिश्चितता भी है और पूरी तस्वीर अत्यंत धुंधली नजर आ रही है। हमें तय करना है कि इस विषादपूर्ण स्थिति में कैसे निपटे जाए। या तो हम भविष्य में क्या हो रहा है इसे लेकर चिंतित हो सकते हैं, या फिर हम इसे जीवन के गहरे अर्थ पर मनन करने के अवसर है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें ऐसी चीजों के लिए चिंता करनी चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हो। जो हमारे नियंत्रण में ना हो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें इस घातक वायरस से खुद की रक्षा करने के लिए प्रबंध के संदर्भ में शोधकर्ता ने अनेकों पत्र पत्रिका शोध का अध्ययन किया और पाया कि वर्तमान समय में यह अत्यंत प्रासंगिक विषय है। भगवत गीता में ब्रह्मा कहते हैं कि हमें हर परिस्थिति में, चाहे अच्छी हो या बुरी, कृष्ण की करुणा को देखने का प्रयास करना चाहिए और समझना चाहिए कि विशेष रूप से अच्छे या बुरे परिणाम हमारे कोविड-19 वायरस आज भारत समेत दुनिया भर में स्वास्थ्य और जीवन के लिए गंभीर चुनौती बनकर खड़ा है। अब पूरी दुनिया में इसका असर भी दिखने लगा है। वैश्वीकरण के इस दौर में जहां आवागमन और संचार व्यवस्था सुगम हुई है, वहीं आपसी संपर्क बढ़ने से पूरा विश्व किसी गंभीर बीमारी के प्रति सुबेद हो गया है। WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लगभग 70 देशों में 95,000 से अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारे प्रमुख घटनाओं में, जैसे रूस, सऊदी अरब तेल युद्ध के बारे में भी है। इसमें परिणाम स्वरूप मार्च 2020 में तेल की कीमतों में गिरावट अमृता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मैडम। अमृता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। सर प्लीज अमृता जी, करिए आंसर। नेक्स्ट इज डॉक्टर मंगला तोमर फ्रॉम GS कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा। डॉक्टर मंगला तोमर मैडम, आप हैं यहाँ पे? मंगला मैडम, डॉक्टर मंगला तोमर फ्रॉम GS कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा, आर यू देयर? No, I feel she is not here. Dr. N.M. Makandar from Dharwad, Karnataka. Dr. N.M. Makandar, हाँ, from Dharwad, Karnataka. Sir, are you here? Dr. N.M. Makandar from Dharwad, Karnataka. Are you here? I feel he is not here. Dr. Mrityunjay Kumar Mishra. Dr. Mrityunjay Kumar Mishra, Magad University, Bodh Gaya. Yes, I am here. You have 5 minutes, sir. You can start now. Kindly be brief, sir. Okay. Mrityunjay ji, you can start now. Done, sir. Okay, thank you. Yes. Good evening, everyone.
Today I Good eve- happy discussion of webinar organization. To my topic is impact of COVID-19 in Indian economic as well as global psychronuria. Myself, Dr. Mrityunjay Kumar Mishra, Faculty of Commerce, University Department of Applied Economics and Commerce, Magad University, Bodh Gaya, Bihar. I stay at home, Patna, Bihar. To discuss the topic, today Indian as well as over world in facing the challenging to COVID-19. But before starting discussion on different issue related to impact of COVID-19 in Indian economy, it is very important to understand the meaning of COVID-19 in the beginning of year 2020. Brings a major challenge in Indian economic society that is protect everyone from threat of COVID-19. The threat of COVID-19 arise from coronavirus, which originally arise from a city in China named Wuhan. In India, our population is very high and density is very high. Apart from the large population problem, we are also facing so many problems like proper employment, housing problem, etc. It is well now fact that our health system is not so much fully upgraded till now to cater the need of large population related to medical issue. Many countries in the world are also facing such as problem. So in the different situations, is problem like COVID-19 arise, then it is differentiatory is big problem before Indian society. Indian society solved care and maintenance. They are social distancing, but not mentally distancing. Indian society solved must rubs at the guideline given by government and a state government as well as different health agency, so that we can succeed in overcoming this problem. Okay, thank you, sir. Okay, thank you, sir. Okay, thank you. Thank you, Mrityunjay ji. Now, next, I would like to invite Dr. Ajay Kumar Jha from LNMU, Darbhanga, Bihar. Dr. Abhishek Kumar Jha, are you there, sir? Dr. Abhishek Kumar Jha, are you there? Kumar Jha? Yes, sir. Hanji, sir. Yes, sir. Your topic is potential impact of COVID-19. Impact of yes, Indian yes, economy. yes, sir. Yes, you can proceed Yes, now. sir. Yes. Yes, sir. सबसे पहले इस वेबिनार के आयोजनकर्ता कुशल आयोजनकर्ता आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह जी को कोटि कोटि धन्यवाद। इस वेबिनार के ओजस्वी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शांतनु सौरभ सर जी को भी मेरा हार्दिक धन्यवाद। टेक्निकल सेशन के चेयरमैन प्रोफेसर मुनेश्वर यादव जी को भी मेरा धन्यवाद। ओजस्वी प्रोफेसर श्री एच.के. सिंह साहब सर जी को भी मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार झा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से आज जो वेबिनार है उसमें मेरा विषय है पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले तो जो ये कोविड-19 का जो प्रभाव पड़ा है वो भारतीय अर्थव्यवस्था पे ये बहुत बुरी तरह पड़ा। जो मेरा जीडीपी था वो कहां से कहां आ गया है। अब इस जो 40 दिन से ऊपर का जो लॉकडाउन अभी जो सतत चल रहा है, इस क्रम में बेरोजगारी का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लगातार मजदूर पलायन कर रहे हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी से। इस कारण से वहां पे जो कंपनियां हैं वहां पे मैन्युफैक्चरिंग बंद है। उसका मेन कारण है कि अभी कोविड-19 के कारण जो आपदा अधिनियम लागू है वो भी एक प्रमुख कारण है। दूसरा ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी एक उसमें बहुत बड़ा योगदान है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना भी बहुत आज के डेट में बहुत कह सकते हैं कि रेलिवेंस है,
लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। मैं बताऊं कि अभी मैं जिस जगह से बोल रहा हूं उसके बगल में कसबाई मार्केट है। मैं कल वहां गया था, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे वहां धज्जियां उड़ रही थी। सरकार कोई गाइडलाइंस बनाती है, उसको पालन पूरी जनता को करना होता है, और लगातार हम एड के माध्यम से विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से मैं लगातार इस चीज को देखा हूं कि सरकार अपने स्तर से हर चीज का प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ सफलताएं हैं तो कुछ विफलताएं भी हैं। मजदूर जो आ रहे हैं उनका ना कोई डेटा एनालिटिकल सेंटर है, डेटा एनालिटिक्स का डेटा जो होना चाहिए वो प्रॉपर है नहीं। इस कारण से अब मान लीजिए कोई भी सरकार कहती है कि मैं इतना मजदूर को 2000 मजदूर को इतना रुपया दे दिया, लेकिन इससे जो होना है वो संभव है नहीं। आखिर ये इम्पैक्ट तो पूरा पोटेंशियल जो इम्पैक्ट पड़ा है कोविड-19 का, आज तक इस इतिहास में पूरे विश्व में कभी रेल और वायु यातायात कभी बंद हुआ नहीं करती थी, वो हुआ है। जिस कारण से एक्सेलेंट जितने भी हमारे मैनेजर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जितने भी उसके नीति नियंता हैं, वो सारे लोग अभी सफर कर रहे हैं। कितनी कंपनियां अपनी सर्वाइवल के लिए अब परेशान है, और ये एक विभिन्न मानक है। इस ये दृष्टिकोण से स्वास्थ्य पे भी पड़ा है, स्वास्थ्य में भी आमूलचूल परिवर्तन। अभी तक सरकार जितने भी हैं क्रिकेट खिलाड़ी को या बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्रीज को आइकन मानती थी, लेकिन आज के डेट में जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमारे प्रशासन के लोग हैं, जो हमारे स्वास्थ्य सेवा के लोग हैं, जो हमारे एकेडमिशियंस हैं, जो इस तरह के समय में वेबिनार का आयोजन करके विभिन्न फोरम के माध्यम से उस पे विभिन्न माध्यम से निष्कर्ष पे निकला जा सकता है कि आखिर इस दृष्टिकोण से कैसे बचा सकता है। कभी भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दिया कि एक स्टार सेंटर में आखिर हम अपने डॉक्टर को भी इस प्रकार से डेवलप किया जाए। कहने को मैं बिहार प्रांत से आता हूँ, मिथिलांचल रीजन से हूँ, लेकिन आज मिथिलांचल रीजन में हम लोगों का कमिश्नरी स्तर पे एक भी ढंग का कोई पब्लिक का हॉस्पिटल नहीं है। जितने भी हैं वो पुरानी है, जो आज से 60-70 साल पहले बना हुआ है। उस चीज का डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन अभी भी उस चीज को बहुत सतत प्रोसेस करने से होगा। और ये जो स्टार आइकन है कि हम अपने क्रिकेट प्लेयर को मान लेते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के डेट में जो ये महामारी है, जो दैवीय आपदा है, इसको आप कह सकते हैं कि ये हमको आईना दिखाया है कि आखिर आप किस प्रकार से अपने जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो मेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, जो आईटी सर्विस के हैं, जो डेयरी सर्विस के हैं, जो एजुकेशन में हैं, जो अपने घर से कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों का भविष्य बने, उनका भविष्य चूके ना, छूटे ना, वेबिनार के माध्यम से, हर स्तर से माध्यम से, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से उन लोगों पे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। और एक दृष्टि पत्र बनाना होगा, विजन डॉक्यूमेंटेशन करना होगा सरकार को कि आप प्रोत्साहन दीजिए, लेकिन हर स्तर से दीजिए। आप डॉक्टर्स को उस नजर से देखिए, उनकी सुरक्षा को देखिए, और रोजगार की सृजन को अब किस प्रकार से बढ़ाएं, ये तो मान लीजिए बहुत बड़ा एक व्यापक स्तर का चीज है। और उसमें हमारे देश के अर्थशास्त्री भी हैं, बहुत सारा नीति आयोग है, तो ये विभिन्न फॉर्मों पे चर्चा होनी चाहिए। इसमें मेरा एक सुझाव है कि अभी जो माइग्रेंट लेबरर का समस्या है, जो कि कोविड-19 का, मैं कल का रिपोर्ट बताऊं कि कल बिहार का जो 38 डिस्ट्रिक्ट्स है, आउट ऑफ 37 डिस्ट्रिक्ट्स आर बैडली इफेक्टेड फॉर कोरोना कोविड-19। तो अब बचा एक डिस्ट्रिक्ट बचा हुआ है। तो इस कारण से आपको इस पे भी देखना होगा कि आप उनको ले आ रहे हैं, उनका ना कोई डेटा एनालिटिकल है, उनको क्वारंटाइन कर रहे हैं, क्वारंटाइन करने के बाद वहां सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे वहां पे धज्जियां उड़ रही है। आप गाड़ी में भर भर के ला रहे हैं, कहीं से ला रहे हैं। प्रशासन का भी एक लिमिटेशन होता है, आखिर वो भी मानव हैं, उनकी भी संवेदनाओं को आपको समझना होगा। और इस प्रकार से बहुत विभिन्न आयामों के माध्यम से हम इस चीज को कर सकते हैं, और कर सकते हैं और करवा सकते हैं। तो ये एक इम्पैक्ट तो पड़ा ही है कोविड-19 पे। मैं फिर से इस वेबिनार के आयोजनकर्ता आदरणीय प्रोफेसर श्री शैलेश कुमार सिंह जी का भी फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कोऑर्डिनेटर साहब डॉक्टर शांतनु सौरभ जी का भी हार्दिक अभिनंदन है।
सम्मानित आदरणीय गुरु प्रोफेसर मुनेश्वर यादव जी का हार्दिक अभिनंदन है। सम्मानित गुरु बीएचयू के ओजस्वी, यशस्वी, कॉमर्स के, वाणिज्य के, व्यापार के प्रतिष्ठित प्रोफेसर HK सिंह साहब का मेरा प्रणाम है, उनका अभिनंदन है। मिथिला विश्वविद्यालय के ओजस्वी विद्वान कुलपति महोदय श्री राजेश सिंह जी का भी अभिनंदन है और डीबी कॉलेज जयनगर के प्रिंसिपल नंद कुमार जी का भी अभिनंदन है। इसी बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। Thank you, Abhishek Kumar Jhas ji. और आपका I would like to praise you for being very brief and guiding us regarding different impact of COVID-19. Next, I would like to invite Dr. Rajiv Kumar Gupta, research scholar from JP University. Rajiv Kumar Gupta ji, are you there? Rajiv Kumar Gupta ji. Rajiv Kumar Gupta ji, आप हैं? Rajiv Kumar Gupta ji. नहीं है सर। Next is Ajay Kumar ji. Ajay Kumar. Ajay Kumar ji, are you there? Ajay. Ajay Kumar ji. Shivendra Agarwal ji. Shivendra Agarwal ji. Shivendra Agarwal. Shivendra Agarwal ji, आप हैं यहाँ पे? Next is Dr. Shweta Rani. Dr. Shweta Rani from Army Institute of Management, Kolkata. Dr. Shweta Rani. श्वेता रानी है सर। Dr. Shweta Rani, yes ma'am. Kindly unmute yourself and then you can speak, Dr. Shweta. All right, sir. Hello, everyone. Am I audible to you all? Anji ma'am, you're audible. Hello? Yes ma'am, you're Am audible. I audible to Yes, all? ma'am, you are audible. Good afternoon, everyone. My special sense of gratitude to the organizing committee of this international webinar. It's really a wonderful and very motivational platform for all the academicians, especially for us, those who all were sitting since last, 60 to 75 days. Though it is not in our habit to be at home and, not to be the part of academic, even though it is a wonderful platform where I could feel that, no, we are getting a time to share our thought. So let's come to my topic. I would like to, use this platform and want to introduce my topic is basically contemplating the divergent leadership at the time of pandemic COVID-19. In the light of this, I am bound to mention that success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm. And yes, we the teachers, we the academician are having no loss of enthusiasm at any point of our time. So that's what the zeal work across with us. With the help of this, I would like to add in it that the COVID-19 is going to unpredictable situation as far as corporate health is concerned, because once we are talking about corporate health, we don't have any established data, not even established data, we don't even having any economical data wherein we can say that we are going to face recession or we are going to face the stability in our economy. It's just all the predictions, we are just forecasting it, that's it. So coming to it, in my research paper, I worked a lot and I found few facts. A few facts like we found that a few facts like mass layoff, 40% of businesses which is going temporarily shut down. Third, I found that many small businesses are financially fragile. In this regard, I would like to mention that depending on these relative situation, and we really don't know how far it is going to intensify, the situations are going to intensify, then definitely we the corporate world is going to face a very
definitely going to face a crucial time, and this will be a time when a corporate firm need to formalize a very sustainable strategies to not just to earn the profit rather than to retain the employees. So employer is going to play a very vital role once they have to make a relation with employers and employees, and definitely they have to work on how they are going to earn the profit as well, because we all know that once we are talking about business, there are two branches of business. One, we all know, to earn the profit, and simultaneously we should not forget to serve the society. In this regard, I would like to say that survival and happiness are having a strong sense of purpose now, because companies need to think on the not only profit earning, rather than they need to think on the survival. They need to think on the job, predicting that we are going to become a jobless, predicting that there will be a loss of job will not serve any purpose, because we all know we are going to face very unpredictable situation. So even though we have to get ready for this, that we all have clearly mentioned, and many learned faculty have, many learned eminent personality have already mentioned this. I am not going to repeat the same thing. And one more thing I would like to mention, that we don't have so much of time to waste. Rather than, we need a corporate firm need to use their lifeboat now. Lifeboat, I would like to mention, it's we have to switch over to plan B, because now plan A will not work here. We have to go for plan B now, and plan B was not predicted at all. COVID-19 virus is going to come, coronavirus is going to come, was not in the picture. So definitely we have to switch over to our plan B. And where I should say, if I am mentioning corporate lifeboat, it means that transform their operations from sustainability and to strongly design, incubate and commercialize socially inclusive businesses and environmentally beneficial, particularly in developing countries like India. Last but not the least, I would also like to mention that it has long been known that extrinsic motivation can only take us so far. Weaving intrinsic motivation into the fabric of organizational climate is going to, is going to give a blood to the crucial stage, as what the India is facing now. There is mounting evidence that employees throughout the world are hungering to find and bring their values to the work, but they have not felt comfortable in doing so. I would also like to mention here that Tata Group have already been, they are working on it. And if you go to their history, so in 19th century itself, they are their, e-governance, their policies on which they work, the pillars what they have is completely spiritual. You will very surprised and astonished to know that each and every departments are always have a plan B, always, in fact always have a plan C. So yes, definitely they are not in the pace of becoming the wealthiest one across world. Rather than, they have a sustainable, I am just taking an example of Tata Group. Founder Jamshedji Tata has believed acquiring wealth was not a primary purpose of their corporate. Rather than, he considered that his company mission was to help communities in which they operate. Company need to purpose that thousand and thousands making money is not the end result of their purposes, rather than to be with the community. So with these words, I would like to say everyone, all the eminent personality, to be at your home, stay safe, and try to save your community as well. Thank you very much, and Jai Hind. Thank you, Dr. Shweta. Before we proceed further, I'll just like to quote two important points which I have read today. The first is that there are two schools of thoughts which are running right now. First is that
there are intellectuals like Abhijit Banerjee, the Nobel laureate, and Raghuram Rajan, who have placed an advice that India could provide a stimulus package to the rural people or the people who are migrating to their homes. This is one of the opinion. The other opinion that is latest today in the newspaper is that there is a change in the labor laws, which happened yesterday itself, and on the three Yeah. states have already adopted it. So there is a change on one part of developing skills in the labors. On the other part, the people are supporting the process of providing funds to the individual. So that's a topic of debate to take place. Another Very last true. Well said. Well said. Another very important thing is very positive news I would like to share is that Israel and Italy have been quite successful, and they are soon going to announce a vaccine for this COVID-19. We are having n number of negative news and information floating. This is a positive news that soon Israel and Italy might announce a vaccine for COVID-19. Thank you, ma'am. Now, Thank I you, would sir. like to move forward. Next participant is Miss Shefali Sharma from Sri Venkateshwara University, Gajraula. Mrs. Shefali Sharma, are you there? Yes, sir. I'm here. Hanji ma'am. Hanji ma'am. Yeah. The mic is Hello, all yours. everyone. Thanks, sir. Thanks a lot. Hello, everyone. I'm Shefali Sharma, Research Scholar of Sri Venkateshwar College, Gajraula. And I'm very much thankful to Dr. Saleh, sir, Rajesh, sir, and all the chief guests, and the entire team of the DV College who organized this webinar and allow us to, and give us opportunity to talk on this pandemic crisis. Now, I move to my own topic, social economic impact of COVID-19. The COVID-19 pandemic had overwhelmed the entire world, and India has also the bone brunt of the same. The spread was so colossal that the World Health Organization had declared it as a pandemic. The way only to control or defeat this mammoth pandemic was to make people follow the social pandemic distance. Yeah, we can say that people have to follow the social distancing and also restrain them from the moving out to avoid social connection. To effectively achieve this objective, the entire country had to be shut and all activity had to be stopped with the minimal human interaction. Hence, inevitably, the country had to be brought under the lockdown. In this regard, the Indian government started taking a strong stand against this pandemic attack in the mid of the March. By the last week of the March, India has sealed all the external and internal borders. From 22nd of March, the whole country is under lockdown phase. That phase has been extended till now's a date. The first case of COVID-19 in India was reported on January 30, 2020. As of the May, the confirmed case COVID of is 19 stand around 62,391. And while the patient have been recovered at the most around at 14,183. Most of the cases in India are from local transmission where people either travel to be a COVID-19 infected countries or come in the contact with the people who had travel history to these countries or come in the contact with the people who had travel history to these countries. Government believes that the stage of community transmission of COVID-19 has so far been avoided by the virtue of the steps taken from the health and the impact of the economy. Now we talk about the Indian economy. The Indian economy was as going through a sluggish phase ever since demonetization and GST was implemented. GDP forecast for 2019-20 was received downward from an optimist 7% to 5.4%. In view of this, the government has announced deep tax cut for business in August 2019 to bring the economic back on the track. The impact of these initiatives was seen in uptick in the purchase of managers index PMI and the manufacturing index for the January and February 2020. However, the COVID-19 has put paid all the hopes of revival of economic in the near term. And amidst nationwide lockdown, the country growth is estimated to have dipped below 5% for May 2019 and 20.
around 400 million workers employed in the informal economy are at the risk of falling deeper into the poverty during this crisis, as per as report by the International Labour Organization. According to the estimate by the Center on Monitoring Indian Economy, unemployment has risen from 8.4% as of the week that ended on the April 5th. Bombay Stock's exchange sanctions fell from 40,360 points on the February 24 to 25,981 points on March 23rd. It has now recovered to the 31,159 as on May. This valuation looked attractive, and unless another shock rattles the market, this is the good time to start making countries and capabilities investment. Lot of sectors are impacted during this pandemic, like agriculture, and agriculture. We can see that the lot of farmers are doing very hard work, but they are not getting that much good amount according to their hard work. And we can see that in automotive, they're totally lost in hospitals and restaurants, hotels and restaurants. They are in bigger of loss of 3 to 3.5% in their business. And we can say that textile work is totally out of work due to the shortage of the things. And one more thing is there, that we can see that that lots of chemical industries are also facing all these crises because they are not able to make their medicines, their chemical reaction to make the people safe. So we think that it be God will grace us and make us out of this crisis. For this, I was just one more thing I have to say, that the most important slogan is that stay home and safe world. Here we need to follow the guidelines of government like social distancing, wash your hand till 20 seconds after the every work of your life. Avoid to making the social connections, and please upload and update the Arogya Setu app. It is the most important app for the everyone, for the entire country, because government get a very good collection from us who is in the trouble and who is not. So it is the most important app for everyone. Please, I request from this webinar that everybody please upload the Arogya Setu app in your phones. And one more thing at last, we don't cross the Lakshman Rekha of a social distance, for the respect of our honorable Prime Minister, who make us know why and what is the importance of Lakshman Rekha. So I now request everyone to please follow the Lakshman Rekha, which is given by our honorable Prime Minister. Thanks a lot for giving us precious time. Thanks a lot, everyone. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Shefali Sharma ma'am, for being brief and guiding us. It was a very nice paper. Next in the series, we have Dr. Purnima Kumari from MJM Mahila College, Katihar, Purnia University, Purnia. Dr. Purnima Kumari, are you there, ma'am? You can start your presentation, ma'am. Dr. Purnima Kumari, you can start your presentation, ma'am. Dr. Purnima Kumari, ma'am, are you there? Yes, sir. Purnima Kumari here. Ma'am, kindly speak up. Dr. Purnima Kumari, ma'am, kindly speak up. You are visible that you are here. Purnima Kumari. She is here. She's here. I think she has network issues. I think she is there. I've seen her. She's not audible, but she's not audible, I think. She's not audible, but she was in this. I've seen her. She must be having network issues. We'll wait for her for 30 seconds and then we'll move to other participants. Purnima ma'am, are you there? I feel she has left. The next in the series is Rashmi Priya, Dr. Rashmi Priya from Lalit Narayan Mithila Vishwavidyalaya, Kameshwar Nagar, Darbhanga. Rashmi Priya madam from Lalit Narayan Mithila Vishwavidyalaya, Kameshwar Nagar, Darbhanga. Dr. Rashmi Priya madam, are you here? 1 minute, sir. Rashmi Priya ma'am, she's here. Kindly unmute yourself and then you can speak. Rashmi Priya madam, sir, 1 minute. she's here. Yes, she's here.
रश्मि प्रिया मैडम, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ, अपने अनम्यूट बटन को दबाएं और तब बोलने की प्रयत्न करें। रश्मि प्रिया मैडम, हाँ मैम, अब आप अनम्यूटेड हैं, आप बोल सकती हैं, बोले मैम। Good evening, everyone. Myself, Rashmi Priya, Department of Sociology, Lalit Narayan Mitra University. मुझे सर्वप्रथम सम्मानित अतिथिगण एवं सभी आयोजक समिति के सदस्यों, विशेषकर शैलेश कुमार सिंह सर एवं सभी प्रतिभागी गण को मेरा नमस्कार। मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के डीवी कॉलेज जयनगर द्वारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल संगोष्ठी का आज आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सम्मिलित होकर मैं भी गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आज मेरे चर्चा का विषय द सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इंडिया है। हमारे देश की जनसंख्या काफी अधिक है और उसका क्षेत्रफल भी बहुत अधिक है। जनसंख्या अधिक होने के बावजूद हम कई सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जैसे समाज में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या, आवासीय सुविधाओं का अभाव, चिकित्सीय सेवाओं का अभाव, अशिक्षा, गरीबी आदि। भारतीय लोग कोरोना वायरस के कारण सामाजिक दूरी के साथ साथ मानसिक दूरी भी बनाने में लगे हैं, जो सामाजिक विकास हेतु बाधक है। भारत में कोरोना वायरस ने संक्रमण के आधार पर भेदभाव को बढ़ाया है। दरअसल हमारे देश में 94% कामगार असंगठित क्षेत्र से जुड़े हैं, जो रोज कमाते व खाते हैं। अतः लॉकडाउन की स्थिति में बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी, जिसके कारण समाज में गरीबी अमीरी के आधार पर असमानता भी बढ़ेगी। लॉकडाउन की वजह से समाज में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही लोगों ने मानसिक दूरी भी बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से समाज में परस्पर सहयोग की भावना में कमी भी आई है। इस वायरस के प्रभाव का दूसरा पहलू यह भी है कि जो लोग शारीरिक रूप से समाज से अलग हो रहे हैं, तो उन्हें अपने डिजिटल गैजेट की दुनिया से जुड़ने का मौका मिल रहा है। जो लोग अपने को अध्यात्म तथा धर्म से भी जोड़ पा रहे हैं, लोगों को अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिल रहा है। लोग अपने भाग दौड़ की जिंदगी से थक चुके थे, तो इस वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन ने उन्हें मानो लंबे वक्त के लिए आराम करने का भी अवसर प्रदान किया है। व्यक्ति अब अपने परिवार को अधिक से अधिक समय दे पा रहे हैं तथा उनके परेशानियों को भी नजदीक से समझ पा रहे हैं। कोविड-19 का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। कोरोना वायरस के कारण हमारी अर्थव्यवस्था बहुत धीमी हो गई है। बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, जिससे देश का विकास दर भी कम हो गया है, जो आर्थिक प्रभाव की दृष्टि से बेहद विघटनकारी है। विश्व बैंक और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने वित्त वर्ष के 2020-21 के लिए भारत के विकास को कम कर दिया है, जो कि 1990 के दशक में भारत के आर्थिक उदारीकरण के बाद के 3 दशकों में सबसे कम आंकड़ा है। भारत एक विकासशील देश है। यहाँ की अधिकतर जनता कृषि पर आधारित है तथा रोज कमाने खाने वाली है। अतः लॉकडाउन की स्थिति में वो अपने रोजमर्रा की जरूरत भी पूरी नहीं कर पा रही है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन उनके द्वारा लाजमी भी है। कोरोना वायरस की वजह से क्वारंटाइन की लंबी अवधि, सीमित यात्रा एवं सोशल डिस्टेंसिंग ने उपभोग व उत्पादन की दर को भी काफी कम किया है, देश को आर्थिक मंदी की ओर अग्रसर भी किया है। अतः वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा उठाया गया यह निर्णय कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ अपने गरीबों को भी सपोर्ट करें, जो लोग को हो सकता है वो उनको 2 वक्त की रोटी प्रदान करें, इसमें सबको आगे आके समाज में अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। नेक्स्ट इन द सीरीज वी हैव डॉक्टर सुमित प्रसाद। अच्छे से दिया मेरे को। धन्यवाद मैडम, आपने अच्छा बोला। वीडियो तुम क्यों नहीं ऑन कर दी? डॉक्टर सुमित कोई प्रसाद, वीडियो ऑन करे आप। तुम डॉक्टर सुमित प्रसाद, डॉक्टर सुमित प्रसाद, आर यू देयर? नेक्स्ट वी हैव डॉक्टर पंकज कुमार समदारिया फ्रॉम अरारिया कॉलेज, अरारिया। डॉक्टर पंकज कुमार समदारिया, आर यू देयर सर? डॉक्टर पंकज कुमार, आर यू देयर सर? हाँ सर। हाँ जी सर, यू कैन प्रोसीड। जी सर, बिल्कुल आ रही है सर। सबसे पहले मैं शैलेश जी का धन्यवाद दूंगा इस वेबिनार के आयोजन के लिए, और परम आदरणीय गुरु डॉक्टर पंकज कुमार, अररिया कॉलेज, पूर्णिया विश्वविद्यालय अंतर्गत। और मेरा आज का टॉपिक है कोविड-19 भारतीय अर्थव्यवस्था के चीन से मुक्ति का अवसर बने वैश्विक विकल्प। ये 31 दिसंबर 2019 को चीन के वुहान से शुरू हुआ यह वायरस, इसका प्रकोप वैश्विक स्तर पर देखा जा रहा है और चीन समेत विश्व की संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव आने वाले समय में आर्थिक सुस्ती लेकर आने
यदि वर्ष 2019 में हम देखें तो आयात शुल्कों में भारी वृद्धि हुई, जिसके चलते वैश्विक स्तर पर निर्यात व्यापार प्रभावित हुआ और विश्व की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने आयात कम करने का प्रयास किया। इस कारण वर्ष 2019 निर्यात व्यापार की दृष्टि से अनुकूल वर्ष नहीं रहा। और वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भी कुल ट्रेड वॉल्यूम 31.9% यानी 31.9% तक गिर सकता है। अब यहाँ एक प्रश्न विचार योग्य है कि कोविड-19 की इस वैश्विक महामारी के पश्चात चीन के अतिरिक्त विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था फायदे वाली हो सकती है? यदि विगत कुछ वर्षों के आंकड़ों पर गौर करें तो विश्व के कुल निर्यात व्यापार में चीन की बड़ी हिस्सेदारी है, जो वर्तमान में 13.2% के साथ विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है। लेकिन वर्ष 2018 एवं 19 से चीन का निर्यात व्यापार एशिया के दूसरे देशों की ओर विकसित गया और चीन के निर्यात व्यापार में कमी का सबसे ज्यादा फायदा एशिया के कुछ देशों जैसे वियतनाम को मिला, जिसने इलेक्ट्रिकल मशीनरी, फर्नीचर, फुटवियर, लेदर इंडस्ट्री आदि में अपनी भागीदारी बढ़ाई, जबकि भारत ने ऑर्गेनिक केमिकल्स तथा आयरन एंड स्टील क्षेत्रों में चीन के निर्यात व्यापार में जगह बनाई। लेकिन चीन के निर्यात व्यापार में कमी का लाभ जितना वियतनाम, बांग्लादेश और कंबोडिया जैसे देशों ने उठाया, उतना भारत नहीं उठा सका। इसका सबसे बड़ा कारण चमड़े निर्यात व्यापार में कमी का। अब बदलते हुए व्यापारिक परिवेश में हमें भारत की संभावनाओं को तलाशना होगा। अभी हाल में भारत सरकार ने सीमा से सटे देशों से आने वाले निवेशों के लिए सरकारी मंजूरी को अनिवार्य बनाया है। ये एक सही कदम है क्योंकि इसका केंद्र बिंदु चीन ही है, लेकिन भारत द्वारा लिए गए फैसले का चीन ने विरोध किया। वैश्वीकरण के इस युग में जब सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस दृष्टि से चीन ने पिछले कुछ वर्षों में भारत में काफी बड़े निवेश किए। वर्ष 2019 में भारत के स्टार्टअप सिस्टम में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जो अब तक का सर्वाधिक है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसमें से लगभग 56,000 करोड़ रुपए चीन ने निवेश किए। आज भारत स्टार्टअप ग्रोथ के मामले में विश्व में तीसरे नंबर पे है, जिसमें चीन का बड़ा योगदान। तो इतने बड़े योगदान को देखते हुए चीन के साथ हम तुरंत अपने व्यापार को खत्म नहीं कर सकते। अब जिस कोविड-19 महामारी के बाद जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो अब तक जो चीन के सस्ते श्रम का उपयोग करती रही है, उनका रुख भारत की ओर हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ कुछ बातों पर ध्यान देना कि चीन ने पश्चिमी तंत्र में मीडिया से लेकर राजनीति तक पैठ जमाने में अपनी वित्तीय ताकत का इस्तेमाल किया। तो इतनी बड़ी पैठ से चीन छोड़कर आने वाले उद्योगों को आकर्षक पेशकश कर पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर, क्योंकि चीन के आर्थिक प्रभावों को चुनौती देने में भारत के सामने कुछ समस्याएं हैं, 2-4 समस्याएं मैं उसकी ओर इंगित कराना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि इस वक्त हम कोविड-19 की रोकथाम के प्रयासों में लगे हुए हैं। अभी हमारा सारा ध्यान कोविड-19 की रोकथाम के लिए। दूसरा बात यह है कि नवीन उद्योगों को स्थापित करने में जो प्रक्रियाएं हैं, उसे पूरा करने में जो लगने वाला समय है वो हमारे यहाँ काफी लंबा, हालांकि अभी इससे चर्चा हो रही है कि इसे कुछ कम किया जाएगा। तीसरी बात है हमारे यहाँ टैक्सों का जंजाल, करों का जंजाल, जीएसटी के अतिरिक्त भी कई कर हैं। हमारे यहाँ उलझा हुआ श्रम कानून है, न्यायिक विवादों को हल करने में हमारे यहाँ समय भी काफी लगता है। और एक भ्रष्ट नौकरशाही, हमारे यहाँ नौकरशाही भी जो है वो नियंत्रण को बदलने के बजाय निर्णय लेने में अपने आप को सक्षम मानता है। तो मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा संक्षेप में यहाँ पर। मेरा पहला सुझाव यह है कि हमें आने वाले समय में स्वास्थ्य क्षेत्र को भरपूर आर्थिक और सामाजिक समर्थन देना होगा। पहली बात इस लड़ाई को हमें जीतना है। दूसरी बात है कि लाभ की संभावना वाले क्षेत्र, खास करके कृषि, उसमें हमें उच्च स्तरीय वित्तीय प्रोत्साहन की दरकार है। तीसरी बात यह है कि प्रवासी मजदूरों के लौटने से पर्याप्त मानव संसाधन अभी गांव में नहीं मौजूद है, तो अतः उसे निकट में ही रोजगार मिले, ये अवसर हमें बनाने होंगे। इसके अलावा श्रम कानूनों में समुचित संशोधन और बैंकिंग व्यवस्था होने की सुलभ उपलब्धता भी आवश्यक है।
आने वाली कंपनियां सिर्फ सस्ते श्रम के लिए हमारे यहाँ नहीं आएगी, बल्कि उन्हें स्किल्ड श्रम की आवश्यकता होगी। अतः हमें अपने श्रम संसाधन को स्किल्ड बनाना आवश्यक होगा, तभी हम विदेशी निवेश को अपने यहाँ आकर्षित कर सकते हैं। और अंत में ये बात कहना चाहूंगा कि शिक्षा और रोजगार के साथ तकनीक का जुड़ाव आज बढ़ता जा रहा है। हम वेबिनार पे आगे सेमिनार से, तो अतः हमें अपने दरों को कम करना होगा। ये डाटा की जो दरें हैं इसे कम करनी होगी और गति बढ़ानी होगी। तो ये जो डिजिटल क्रांति का सपना प्रधानमंत्री का है, जो डिजिटल क्रांति या डिजिटल इंडिया का जो सपना है, वो भी हमारा पूरा हो सकता है। तो इन माध्यमों से हम जो विदेशी निवेशों से आकर्षित कर सकते हैं। तो अब उत्तर कोरोना या पोस्ट कोविड विश्व किस तरह बैठेगा, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, किंतु ये निश्चित है कि कुछ जो स्थापित मान्यताएं हैं वो बदलेगी और कुछ नए मान्यताएं, नए प्रतिमान जन्म लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पंकज कुमार जी फॉर ब्रीफिंग अस इन अ वेरी पॉजिटिव वे। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। Dr. Purnima Kumari has returned. Dr. Purnima Kumari has rejoined, I feel. So she will be our next presenter. Dr. Purnima Kumari from MGM Mahila College, Katihar, Purnia University, Purnia. Ma'am, are you there? Yes, sir. I'm very much here. Thank you, sir. The mic is all yours, ma'am. Thank you. There is one very famous saying. It said that modern man is the most miserable. And I guess in today's time when everybody is using this internet, a frequent connection loss has become so much evident. So I am very sorry. There was a connection loss, but I had regained it. The impact of this COVID-19, ladies and gentlemen, is very wide. But I'll be taking, be it an individual, social, economic, it's really wide. But I'll be taking, as a person who belongs to economics fraternity, I'll be just taking the economic impact of this COVID-19, and that too on a very burning issue right now, the repatriation, the immigration of the Bihari laborers. Laborers are immigrating, they are returning back to their native places from big cities to all these UP, Bihar, Odisha, but in Bihar, the inflow is really high, and it's a matter of concern as well as a opportunity for the government to undertake. If the government can wish to, if the government visualize to it. The laborers go to big cities in search of their job, or to get good medical facilities, or for better education of their children. They get job there, and everything was going on very smooth till this lockdown had started on 24th of March. With the insecurity which started prevailing right after the announcement, the migrant laborers, they were become very uncertain, their life had become uncertain. So when the things got eased up in the third phase of the lockdown, they started returning to their hometown, and they are returning in big numbers, in lakhs. They are returning in lakhs with no money, job lost. So here the government has to undertake few measures. On one hand, their demand is going to be less for most of the people. Either we are getting slashed salary, or we are under threat of losing our jobs. So on one hand, the demand is decreasing day by day. That will surely affect the supply, and this is also happening with the laborers. So in my opinion, as the analysis goes on, it is very rightly said by the famous economist J.M. Keynes that this demand
factor affects the economy very deep. And in the year of depression, the Great Depression that occurred in the year 1929, he gave the suggestion to dig the follow that dig the whole policy. And here also, what I would like to suggest to the government, that take this integrating labors as an opportunity to increase, to boost the demand, as well as to get them engaged, because they are feeling the loss of job. They have got a sense of loss of job, and their demand is always also going down. So this is in a circular manner going to affect the economy as well in the long term. So the government of Bihar can, in my view, can take two measures primarily, because on one hand, the government has to undertake the inflow, it has to tackle, and on the other hand, government need to boost the demand of the economy as well, so that the depression may not come in. And in my view, there are two things. Number one is reinforcement of Manrega. The Manrega is already there, but widening up of activities of Manrega is really required. With the widening of activities, lot many people can be engaged, and supervision is important of Manrega activities. And sorry to intervene in between, ma'am. Kindly be brief, ma'am. We are in short of time. I'll be. Sorry. And Thank the you. second is to develop the sustained livelihood for them. A few development of enterprising activities for them, because governments are also thinking about that also, to skill the laborers and then engage them in various activities. But right now, making of sanitizers, masks, and sanitizers and masks, they can undertake such activities. So both the things, with the view of maintaining social distancing, the government can undertake, the government can motivate the laborers to be engaged in such activities. So it's like all from my side. Thank you. Thank you, Dr. Purnima ma'am, for being so brief. Today is a very auspicious day. आज मातृ दिवस है. So I would like to just quote one line before you. माँ से कोई छोटा शब्द हो तो बताना, माँ से छोटा कोई शब्द हो तो बताना, माँ से बड़ा कोई शब्द हो तो बताना, माँ से छोटा कोई शब्द हो तो बताना, और माँ से बड़ा कोई शब्द हो तो बताना. So all the information we are talking about, the epic center जहां से ये सारा ज्ञान आया है, वो हमारी माँ है. तो उनको नमन है हम लोगों की तरफ से. On this auspicious day, the next presenter for today is Dr. Rajni Singh from HPS College, Madhepur. Dr. Rajni Singh from HPS College, Madhepur. Ma'am, are you here? मेरा कहाँ है? Dr. Rajni Singh. Hello. हाँ जी Hear ma'am. me? Yes ma'am. Okay. Yes ma'am. First of all, welcome to all delegates and all participants who joined this webinar, and welcome to organizing team also. Myself Rajni Singh, Department of Sociology, Constituent College of Lalit Narayan Mithila University, HPS College, Madhepur, Madhubani. My paper topic is the social impact of COVID-19 on India. बहुत जिस्ट में मैं बताना चाहूंगी पेपर का, क्योंकि टाइम बहुत कम है. तो मेरा पेपर जो बेसिकली एक बुक लिखी हुई है जैरेड डायमंड की, बुक का नाम है कोलैप्स, हाउ सोसाइटी चूज टू और फेल और सक्सीड. Means in the present paper we discuss on the social impact of COVID-19 on India. Jared Diamond discussed famous book Collapse, How Society Choose to Fail or Succeed, about how the society end due to some factors. What are the factors? Some factors. He further explains the 5 major factors which are responsible for the collapse of complex society. जैसे आज की सोसाइटी कॉम्प्लेक्स है, इस तरह की सोसाइटी में 5 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण सोसाइटी जो होती है एंड हो सकती है. और उसके लिए उन्होंने अपनी बुक में सजेशंस भी दिया है कि व्हाट प्रिकॉशंस, व्हाट मेजर वी टेक टू सेव आवर सोसाइटी आल्सो. द फर्स्ट
factor is climate change. Second, hostile neighbors. Third, environmental problems. Fourth, the collapse of essential trading partners and the society's response. And the last one is the society's response to the foregoing four factors. Presently, keeping in mind the broader perspective of Diamond's collapse theory and explore the social impact of COVID-19 on India, in today's situation, the first three factors are relevant of our nation. And the fourth factor is the prompt factor of the COVID-19 crisis as failing down due to lockdown. Many of us have nurtured by the government, as we all know that during this lockdown. This is a great response anyone could observe throughout the country, but at the same time, there are certain exceptional which come in front of us as a challenge. Approximately 95% of citizens are cooperating the government or maintaining the disciplines which are essential to decrease the number of COVID patients in the society. But the rest 5% are creating a risk situation to the effort and measure to hold the pandemic and are accountable for the collapse of entire system. अगर आप cases of hostility देख सकते हैं, cases of hostility can be observed in metropolitan cities like Pune, Bangalore, Mumbai, Delhi, etc. In these localities, the societies regarding residential जो society है वहाँ पे अगर कोई travel history आती है किसी patient की, कोई travel history थी जो initial stage था हमारे यहाँ COVID का, उसमें अगर किसी की travel history थी तो वो उसको छुपाता था, और अगर किसी neighbor को बताने पर वो क्या कहता था कि they are fighting with their neighbors, they are violently by getting into a fight with their neighbors. On the other hand, some individuals have not disclosed their travel history also. Such cases have been observed in affluent class or upper middle class in the society. But unexpectedly, aggression has been observed even against the corona warriors like doctors, nurses, health professionals, police, and etc. And such other people residing in the housing society or neighborhood. Several cases of these fighters who are the fronters of this battle against the COVID-19 are being avoided by others for fear of being affected. Instead of showing respect and gratitude towards them, they and their families are treated badly and not supported by the society members in the wake of unnecessary fear in the mind. Many doctors and health workers have been forced to leave the Dr. Rajni ma'am, sorry to intervene. Kindly be brief, ma'am, and kindly try to conclude in 2 minutes. Thank you. रीजन था जो सेकंड था डायमंड की का उनका ये था कि जो सोसाइटी रेस्पॉन्सिबल होती है अगर इस तरह का कोई पैराडेमिक जो है इंसिडेंट हमारे यहाँ होता है तो जो थर्ड था एनवायरमेंटल बेसिकली होता है हमारे यहाँ कि अगर एनवायरमेंटल डिस्ट्रॉय होता है जैसे हमारे यहाँ पॉल्यूशन है इससे भी सोसाइटी पे कभी काफी इम्पैक्ट पड़ता है अगर हम इंडिया की सिचुएशन और जो इनका फोर्थ फैक्टर्स था किसी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय होने का वो ये था कि जो हमारी इकोनॉमी होती है वो अगर डिस्टर्ब होती है तो भी जो है सोसाइटी जो होती है वो डिस्टर्ब होती है जैसे कि अभी राइट नाउ लॉकडाउन के कारण जो छोटे बड़े जिस तरह के अगर एवरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की देख लेंगे तो सारे बंद है और सारे कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लेकिन और जो फिफ्थ उनका फैक्टर था तो फिफ्थ फैक्टर इज दैट कि इन चारों फैक्टर के कारण सोसाइटल जो पीपल्स हैं जो इंडिविजुअल हैं वो किस तरीके से फाइट करते हैं उस सिचुएशन से वो है और इसके रिस्पॉन्स में उन्होंने दो बातें कही जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसी के साथ मैं जल्दी खत्म करूंगी उन्होंने कहा कि दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग जिसमें उन्होंने कहा कि द करेज टू प्रैक्टिस लॉन्ग टाइम थिंकिंग एंड टू मेक बोल्ड करेजियस एंटीसिपेटरी डिसीजन at a time when problems have been perceptible but before they had reached crisis proportion. Second, उन्होंने कहा था कि आप reconsider core values, the courage to make painful decision about values, which of the values that formerly served in a society well can continue to be the maintained under new changed circumstances. जैसे कि हम अभी सोशल जो जिस परिवेश में अभी तक रह रहे थे बिफोर कोविड उस सिचुएशन में अभी हमारे काफी चेंज हुआ है लेकिन हमको पेशेंसफुली इस तरीके का एनवायरनमेंट बनाए रखना चाहिए लॉकडाउन के जो सारे मेजर्स है उन्हें अपनाना चाहिए एक बहुत अच्छा कोट लिखा हुआ है संस्कृत की एक श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट उसको मैंने इंग्लिश में लिखा है लास्टली वन थिंग रिमेंबर एवरीवन दैट वेल्थ a friend, a wife, and a kingdom may be regained, but when the body is lost, may never be acquired regained. So we all must act responsible and support each other to prevent the collapse of social, economic well-being of our society. Presently, you can be able to face the situation only with a healthy body and a strong mind.
माइंड। एक और डार्विन की थियरी है, वो हमेशा ये कहते थे सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, जो फिट होगा वही सरवाइव करेगा। तो मेंटली, फिजिकली और सोशली आप फिट रहेंगे, तभी जो है हम इस कोविड का जो सिचुएशन है उसे बहुत बेहतर तरीके से फाइट बैक कर सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर रजनी, मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा। देयर वाज अ वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट जिनके बारे में आपने सुना होगा, जेके मेहता साहब। ही टॉक्ड अबाउट वांटलेसनेस एंड दैट इज द क्रक्स ऑफ द होल थिंग। हम इंसानों की मांग कभी पूरी, डिमांड इज नेवर ओवर, एंड सो द प्रॉब्लम theory of wantlessness. Yes ma'am, very true. The next speaker is Dr. Swapnil Chaudhary, assistant professor. Ma'am, Dr. Swapnil, are you there? Swapnil Chaudhary, are you there? Swapnil Chaudhary, are you there, ma'am? Yes. Hello. Hanji ma'am, you can continue. Hello. Yes ma'am, you're audible. You're audible. It is audible now. Okay. Hanji ma'am, you're audible now. Hello everyone. Okay. Respected panelists and all the esteemed speakers. Myself, Swapnil Chaudhary, assistant professor, political science, RB College, Dalsingh Sarai. My topic is a pandemic, COVID-19, which has commutated the political future of this earthly world. Very quickly and shortly, in bullet form, I would like to present main key points on how COVID-19 has affected politics and political system at nation and at international level. Okay, firstly, it got suspended all the journal and legislative work and activities worldwide. We can very easily notice it in India and in various countries of the world. Secondly, it has limited the rights of the citizens and restricted the freedom too, which is called as fourth pillar of democracy. Thirdly, it has huge impact on popularity of the government and political parties, which is called as rally round the Dr. Swapnil, you are not audible, ma'am. Dr. Swapnil, are you there? You are not audible, ma'am. Dr. Swapnil, are you there, ma'am? You are not audible. I think she has network issues. The next, Hanji ma'am, you are there? Hello. Yes, ma'am. Your voice is not clear. There's Kindly sit at that place where you have good network, so then you'll be audible. Hello. Fourthly, Hanji, now you're audible. Hello, is it audible now? Yes, yes. Okay. Is a both and empty for the nation themselves during the pandemic in dealing with it. Next, it has enormous effect on the international relations among all the nations of the world, where some nations are helping each other in finding vaccine against coronavirus, and on the other hand, nations are just blaming I'm sorry, you are not audible at all. Swapnil ma'am, you are not audible. Swapnil ma'am, you are not audible. If you permit, I may go to next participant and you can reconnect. Yes. The next speaker is Devesh Pal, Dr. Devesh Pal from Allahabad Degree College, Prayagraj. Dr. Devesh Pal. Hello. Hanji sir, you can proceed. Hello, is I audible? Yes sir, very audible. You are. Hello. Yes sir, you are audible. Hello, is I audible? Yes sir. Okay, thank you. Good evening. Okay, thank you. Good evening, teachers of great repute and my dear fellow mates. My name is Devesh Pal and I'm from Allahabad. The topic of my paper is Beyond Lockdown, the Path to Manage Personal Finance. With this ongoing coronavirus, COVID-19 pandemic distress, it seems that we are new to this earth or a new inhabitant because the life of everyone has completely changed within 1.5 months. All of us life have been impacted due to this pandemic by some way or the other. The situation is even worse for the one who suffered through pay cuts or job losses.
The workers of the organization in the gig economy, or those workers whose income varies with the level of work they do, have suffered the biggest hit due to this pandemic. The workers and employees who work in sectors like hospitality, aviation are going through a more harsh condition of financial crunch than in comparison to those in FMCG or essential goods. When it comes to personal finance, it is actually the process of planning and managing of one's personal financial activities such as generation of income, it's part of its spending, and another part of its saving, from saving to investment and then to protection. Coronavirus or COVID-19 is a virus that was first identified in Wuhan in December 2019, the capital of Chinese Hubei province. This virus is just an outbreak until it moves beyond the geographical boundary of the nation. And once it becomes pandemic, it is started to affect both the health as well as the economies. Suggestion to manage personal finance during and post-lockdown. Reevaluate your budget. Every household works on a pre-planned budget where everything is set. We talk about this amidst a pandemic where people are losing their job, suffering pay cuts, and many other types of hardships and emergency, then it becomes a must to reevaluate your budget. So the first thing that strikes your mind is to reevaluate your budget according to the present income, giving preference to your spending, avoiding heavy expenditure, and making proper investment plan. It is always advisable to set aside a portion of your income as emergency fund for such emergencies that might occur in future. Do not ignore credit card payment. It is my opinion not to ignore credit card payment as they charge heavy interest rate on non-payment of their dues. So it is advisable to make the payment unless you are facing financial crunch. And even in that situation, make the minimum payment to avoid the exaggerated bills later. And also not to stop anybody's payment if you are capable to do so. Stock up but do not splurge. It is good to have a stock of groceries and other goods of necessity, but overspend on it may hurt you the time of emergency if it occurs. In this situation, it is advisable to stock up for a month items only. Even the government assures that we have enough stock for 6 months. It is also advisable not to fall into black marketing of goods because they occur quite often in these types of situations. Avoid panic selling in the market. As the market turned its head from bull to bear because of this pandemic and shares are falling down, it is also advisable to one not to sell the shares at this point of time, because if you sell the shares, your calculated losses will become a reality. Wait for the time being for the market to stabilize, and once the volatility ends, market will again starts to climb. Guard your health. It is recommended for one to guard their health by taking a health or a life insurance policy, because as the spend is related to health, so it is very essential, at least for the earning members of the family, to get insured. So by this, the family of one gets protected against a possible financial emergency of loss. Watch out for fraud. Scammers are taking advantage of this pandemic to con people of their money. So it is advisable for one not to fall into such and lose your hard-earned money. Fraud can be like charity scam. They ask you for charity through phone calls or through fake websites or portal over the internet. Person in need is scam. They pretend to get stranded in this unknown city and also tell that they were being robbed and ask you for help. So for the time being, stay away, stay safe. Moving on to the conclusion, these tips can get yourself out from this storm unharmed. You can also use these tips in normal condition to manage your personal finance. Finally, don't see this as a pandemic, but as new avenues of opportunities that will come to India once this COVID-19 ends. Now the rulers of the economy will change and a new sun of the galaxy will rise as India. Thank you. Thank you, Dr. Devesh, for briefing us in such a perfect manner. The whole scenario of finance after COVID-19 is going to change, what I personally feel. Thank you, Dr. Devesh. Next, I would like to invite Dr. Swapnil Chaudhary to kindly conclude your work in 1 minute. Hello. You are disconnected. Yes, ma'am. You can speak now. Kindly try to conclude in 1 minute now. Yeah, sure. There is an increase of cooperative federalism among the nation. With this political system, we can also spot massive effect on international organization, especially on WHO, that is World Health Organization. We can notice the change or postponed of election dates in various states and countries. For example, Maharashtra in India.
So these are the 8 to 10 foremost effect we can see politically. I have elaborated and explained all the point in my research paper. Please go through it. Coronavirus has its immense effect economically, socially, psychologically, politically, and environmentally. And footprints of its impact can be seen not only for short term but for the long term. Thank you. Thank you, Dr. Swapnil. Thank you, ma'am. Next in the series, we have Dr. Ritu Singh from MUIT Lucknow. Dr. Ritu Singh from MUIT Lucknow. Are you there, ma'am? Dr. Ritu Singh. Next, we have Dr. Manoj Kumar Mishra from Gorakhpur Institute of Technology of Management, Gita, Gorakhpur. Dr. Manoj Kumar. Yes, sir. I am here. Sir, I'm audible? Yes, sir. You have 3 minutes, sir. Kindly try to be very brief. Because we are running short of time because due to that's some. the reason. Yeah, Thank sure. you. Thank you. I will try to just fill the gagar mein sagar Thank within you. that very Thank you. Thank you, sir. Thank you. A very good evening to all of you, and I deeply appreciate the organizer who has put the Bhagirath effort to organize this such a nice webinar. And thereafter, I would say thanks to my guru, Professor H.K. Singh, who showered his blessing upon me. COVID has sparked urgent question about the impact of pandemic and what are the countermeasures are there on the economy. Like what is the real impact on economy? We have to answer two questions. The first question is whether this particular thing is temporary or permanent, means whether this impact is temporary or permanent, means when this particular pandemic has gone, and what would be the next. Thereafter, we have to think what are the social changes have been taken place due to this. I would like to start this word with the prominent Dr. APJ Abdul Kalam. He said, difficulties are necessary for human being because it paved the path for the development. So without necessary, or आज की date में we are seeing the Mahabharata also, there is a प्रकरण in Mahabharata. कुंती के पास जब श्री कृष्ण आते हैं और पूछते हैं, बुआ आपको कुछ मांगना है तो आप कुछ मांगिए हमसे. तो कुंती कहती है, प्रभु मुझे दुख दीजिए, क्योंकि आप मुझे दुख देंगे तो मैं आपको हमेशा स्मरण करती रहूंगी. तो प्रॉब्लम को लेकर के सिर्फ रोना, इट इज बेटर टू lit a candle rather than curse the darkness. हम लोग सिर्फ ये बात करते रहे कि आज की डेट में डेली वेजर्स आर नॉट having their job, private workers are they lose their job, 1,000 people are laid off. Lot of problem is there. The situation is allowing for the people, because it is a question mark for the human beings, because there is a question mark for our existence. So how we can tackle the problem? I was going through a news which is a very good news in Haryana. Mr. Rahul Bajaj, a businessman who was engaged in producing utensils. Right now he has shifted. There is a paradigm shift. क्रिएटिविटी और इनोवेटिवनेस की वजह से उसने अपने बिजनेस को चेंज किया और वो वॉशिंग स्टेशन बनाने लगे. शुरुआत किया 50,000 रुपए से. आज की डेट में ही इज हैविंग 5 crore rupees डिमांड, मींस ऑर्डर विद इन half and 1.5 month. So you can imagine ki how we can tackle these things, because this particular problem means COVID-19 has impacted sport, news, media, entertainment, service industries. No, nothing has left. All sporting events are at halt, suspended. This is the time of IPL, but we are waiting. We are watching the news and all. FIFA, World Cup, Olympic game, each and everything is over. The entertainment industry is heavily impacted. Drama and serials, people are not there. 1,000 people are directly or indirectly engaged. So we can say this particular problem may, for a certain period of time, but if it severely hit our way of life, like after passing this particular problem, there is a paradigm shift. Many things, like many aspects of life. So jointly we can able to tackle the problem like COVID can be tackled by the joint effort rather than the individual. Means everyone has to think for the betterment of the country. Like Japan is requesting to Indian government to start their business. So COVID, we should united to fight the global panic, like which is haunting the world. US and means France and Italy, China, each and every there should be collaborative. At the same time, India has a great opportunity for the means to become a economically strengthened, because many companies are shifting from China. They are coming to the India. They are looking for the Indian market. So if we are follow the traditional thought which we are earlier following, they will not be able to manage the thing. If we are having some coordinated response from the different authorities, government and people, then only we can be able to just counter this problem in a very positive way. And I think people from India are you can say they have the ability to fight out the problem. They definitely the day will come when we'll be able to counter the problem. Thank you. Thanks a lot. Thank you, Dr. Manoj. आपने गागर में सागर भर दिया है.
And there are basically three terms in which I would like to conclude your paper. Need, want and demand. ये तीन शब्द हैं जो हमें समझना होगा. Need, want and demand. It is for the whole world. We need to understand these three concepts and then proceed further. That could be one of the solutions. Moving forward, the next presenter is Dr. Rupali Srivastava and Alpana. Dr. Rupali Srivastava and Alpana. Ma'am, are you there? Yes. Hello. Hanji, ma'am. Good evening, respected colleagues and honorable dignitaries. Myself, Dr. Rupali Srivastava, Faculty of Economics, Department of Economics Planning and Development, Gautam Buddha University, Greater Noida. My student, Ms. Alpana, shall be making a presentation on the topic Impact of COVID-19 in India, a current economic scenario. Alpana, please go ahead. Hello. Hanji, ma'am, you're audible. Alpana ji, you're audible. You can speak now. I want to present in PPT. So you can share the screen. You can share the screen. You must be having share screen option there on your screen. No, but there is right host disable. Just 1 second, ma'am. These are being candidates are. Now you can try, Dr. Alpana. You can try now. You must be having a screen sharing option there. Is this so? Yes, yes, it is visible now. Ma'am, kindly try to be brief. You have 4 minutes, ma'am. Okay, so my topic is impact of COVID-19 in India, a current economic scenario. First of all, the introduction is on 2019, the World Health Organization has committed that the new virus outbreak in a public health. WHO called this disease Wuhan virus because it is came from